morning, friends from the media. I would like to formally welcome you to this press conference by the Election Commission on forthcoming assembly polls in the 5 states of Mizoram, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan and Telangana. I have with me the Honorable Chief Election Commissioner Shri Rajiv Kumar Ji, the Honorable Election Commissioner Shri Anuj Chandra Pandey Ji, and the Honorable Election Commissioner Shri Arun Goyal Ji. We also have with us today senior officials from the ECI headquarters. I am B. Narayanan, DG Media for the Commission. The format is as follows. There will be opening remarks by the CEC along with presentation. We will share the PDF copy of the presentation with all of you after the event is over. Following this, there will be a brief question and answer session. When you want to ask a question, raise your hand. Wait for the chance to be called to put your question. I will direct the mic to come to you. When it's your turn, introduce yourself and your organization and then ask your question. Please keep your mobiles on silent mode. Sir, I request you to deliver your opening remarks. My colleague, Honorable Election Commissioner Shri Anuj Chandra Pandey Ji on my right side and Shri Arun Goyal Ji on my left, ECI officials and friends from media in such a large number. Very good morning to you. I hope you had a good weekend. You were all worried that the conference may happen during the weekend. So I hope you had a good weekend. And it's a good starting on Monday. Friends, as you are aware, we have gathered here today to declare the schedule for the elections to the legislative assemblies of Mizoram, Chhattisgarh, Rajasthan, Madhya Pradesh and Telangana. And we have gathered here today after a significant hiatus of 6 months. We met last. And as we stand on the cusp of elections in these states, it is worth noting that these polls hold a unique significance, not only for the residents of these states but also for the nation. We will now, after this, meet in this form for the 24 elections. In the span of 40 days, the Commission has visited 5 states, all the 5 states, and had very detailed discussions with the political parties there, with the enforcement agencies of the central government and the state government. For example, all across the spectrum, to just tell you, income tax, PRI, narcotics, coastal guards, state police, banks, RBI, civil aviation, everyone, whosoever is involved in some form of enforcement for the elections, RPF, Railway Protection Force, GRP, so everyone. So what transpired, what did they tell us and what did we told them, all that I will brief you. We met the political parties representatives और उनके भी जितने सुझाव, जितने फीडबैक थे वो हम सब लोगों ने लिए. उसके बारे में भी मैं थोड़ा आपको बताऊंगा. I'll use this opportunity to brief you about what had happened during these last 6 months when we have started the preparation for the elections. मुझे मालूम है कि आप लोग शेड्यूल जानने के लिए इच्छुक हैं ज़्यादा, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को हम यूज़ करेंगे आपको ये बताने के लिए कि कितनी मेहनत इन चुनावों को कराने के लिए होती है. So friends, just to give you an overview, the Mizoram Assembly's term is on 17th December 23. Then all of the others in the latest by 16th of January 24. And there are total assembly constituencies. Number is 679 if you total up assembly constituencies of Mizoram, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan and Telangana. तो जो ये 679 assembly constituencies हैं, वो पूरी country की 4200 लगभग legislative assembly constituencies का 1/6 है. और इसी प्रकार से जो इनके electors हैं, जो 16.14 करोड़ है combinedly, वो भी लगभग 95 करोड़ वोटर्स के 1/6 हैं. So the entire country, by that standard, would be going to polls in
almost only 1/6 of the country's spread of the voters and the assembly constituencies. The general overview, if we were to give you, the Mizoram has 8.52 lakh voters, Chhattisgarh 2.03, Madhya Pradesh 5.6, Rajasthan 5.2, Telangana 3.17, and total voters in these states would be totaling to 8.2 crore male and 7.8 crore female voters. Very interesting fact is that first time voters in these states would be 60.2 lakh. I would elaborate on this point little later when I come to that. But this emphasis during the special summary revision in these states has been such that we have concentrated on the enrollment of the young voters, PWD voters, 80 plus voters, centenarian voters, and also the improving the election gender ratio for these states. अगर आप देखेंगे तो जो PWD हैं उसके total voters की संख्या 17.34 लाख, which is who are also entitled to vote from the comfort of their home if they are not able to come to the polling station. Similarly, 80 plus 24.7 and centenarian voters 32,410. All these three categories को पहली बार असेंबली इलेक्शंस में अपने घर से वोट की सुविधा प्राप्त होगी. और फ्रेंड्स, द लास्ट कॉलम अगर आप देखेंगे इलेक्टर जेंडर रेशियो, तो दो स्टेट में ये जेंडर रेशियो ज़्यादा फेवरेबल है विमेन का. इट इज़ 1063 एंड 1012, विच इज़ अ वेरी हैप्पी स्टेट. इन अदर स्टेट्स ऑल्सो it has improved because of the special efforts undertaking during the SSR. और इस SSR की वजह से इन सब में भी ये electoral ratio काफी बढ़ा है. तेलंगाना is also very high, 9998, and so there is improvement even in the Rajasthan. Now, if you look at the inclusive electoral roll, we are emphasizing a lot. Let me repeat. जो इलेक्टरल रोल है वो पूरी तरीके से प्योर हो, वो पूरी तरीके से हेल्दी हो, इसके ऊपर में बहुत एम्फेसिस है. और ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा कि जो SSR पूरी कंट्री का है वो भी शुरू होने वाला है. So just to say that women voters, young voters, particularly vulnerable tribal groups, persons with disabilities, senior citizens, transgenders, सबके ऊपर में इस SSR में जो इन 5 स्टेट्स में हुआ विशेष अभियान चलाया गया ताकि पूरा का पूरा जो इलेक्टरल रूल है उसमें पहले सबको शामिल करें और फिर सबको हम वोटर पोलिंग स्टेशन पे लेके आए. सो दिस इज द एफर्ट. हाउ डू वी फर्स्ट एंटर देम इनटू द रोल एंड देन ब्रिंग देम टू द पोल. सो फ्रॉम रोल टू पोल is the emphasis by which we are all working. So now, friends, very interesting and a special effort which the commission is undertaking. ये जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं पूरी कंट्री में 75 ऐसी कम्युनिटी हैं और कमीशन ने ये बीड़ा उठाया है कि हम इनको सबको जो लास्ट पंक्ति में हैं, दे आर ऑलमोस्ट द लोएस्ट इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडाइसेस इन द एंटायर कंट्री अमंग्स्ट द वोटर्स. सो वी विल एनरोल देम फुल्ली एंड एज ए हैप्पी रिपोर्टिंग टू यू, in these 4 states we have 12 PVTGs and they have been enrolled 100%. ये हमें बड़ी खुशी का विषय है कि 100% एनरोल हुई है और हम आपको ये भी दिखाएंगे कि इनको किस प्रकार से हम पोलिंग स्टेशंस में लाने की कोशिश करेंगे. अगर यूथ की बात करें तो 60 लाख जो यूथ हैं वो ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे 18 to 19 years in these 5 states. And as you are all aware, there was an amendment for qualifying dates to be changed to 4 dates instead of the 1st January of the every year. So उसकी वजह से 15.39 lakh voters as such who are completing their 18th year after the 1st January 2023. And because of this amendment, 15.3 lakh voters would be able to exercise their franchise in this election. This is the positive effect and of that amendment which we brought. And in line of that, we are also taking up to showcase that these 2,900 plus polling stations will be managed by our youngest employees
so that we also focus on and tackle the youth apathy which we keep encountering in states after states. Similarly, if we come to women, as I mentioned earlier, women का जो gender ratio है वो भी लगातार improve हो रहा है. So Chhattisgarh has improved from 18 from 995 to 1012. For Madhya Pradesh from 917 to a jump of 945. Mizoram again from 1051 to 1063 gender ratio. And Rajasthan and also Telangana from 982 to 998. And net addition of the female electors, which is also a very happy state for us, is 23.6 lakhs. अब एफर्ट ये है कि उनको पहले हमने पोल में जोड़ दिया और अब हम उनको पोलिंग स्टेशंस पर लेके आए by providing them all kinds of facilities which are possible. How do we do that? So if you look at the inclusive and pure nature of the electoral roll since the efforts we are making after the second SSR which happened in these 5 polling states, 57.89 lakhs is the total addition, and this happened. There is a house-to-house survey which is happening which happened in these states and which is also happening in the entire country in a run-up to the SSR for the entire country. Deletions were 20.59 lakhs, and most importantly the modifications. किसी का एड्रेस गलत है, किसी का फोटो ठीक नहीं है, किसी का फोन नंबर डला हुआ नहीं है, सबके लिए 22.35 लाख मॉडिफिकेशंस और 18 to 19 एज ग्रुप में 18.37 लाख एडिशंस. ये सभी स्लाइड्स की कॉपी आपको साइड बाय साइड मिल रही होगी. These are being put on the media website and all, so you don't have to repeat this. I am sure you are getting it side by side, and it will be posted also on our website immediately. Next, before coming to the overview of polling stations, friends, through you, let me tell everybody, all voters in the country, that जो general SSR है, summary revision for the year 24 would start from 17/10/23. Draft rolls will be published on 17/10/23. मेरे सभी वोटर्स से आपके माध्यम से अनुरोध है कि अपना अपना नाम देखें, अपना अपना पोलिंग स्टेशन देखें. कोई भी नाम किसी को ऐड कराना है या हमारे यंग वोटर्स को तो ऐड कराएं, महिलाओं को जिसको भी ऐड कराना है ऐड कराएं उसमें. किसी को चेंज करना है, फोटो चेंज करनी है, मोबाइल नंबर लिखना है तो लिखाएं. घर घर में हाउस टू हाउस सर्वे would be undertaken by BLOs from 17/10/23 to 30/11/23, यानी 17 अक्टूबर 23 से 30 नवंबर 23 तक पूरी कंट्री में किसी को भी वोटर लिस्ट से संबंधित कोई भी एडिशन कराना है, डिलीशन कराना है, कोई भी नाम में मॉडिफिकेशन कराना है, एवरीबडी इज वेलकम टू डू दिस आइदर थ्रू BLO or through the voter helpline BHA application. You can directly do this. So I would appeal through you to everybody to kindly make these changes. Friends, now coming to the polling stations, there would be 1.77 lakh polling stations in these 5 states, and of which 1.01 would have webcasting facility. We have prescribed 50% webcasting, and with a liberty to the states on the basis of vulnerabilities to increase it on their own. So this would be close to 1.01 lakh. Then all this would be monitored through the control rooms, and the number of women managed polling stations would be, there would be 17,734 polling stations which will be model polling stations. There would be PWD managed polling stations, 621, and women managed would be 8,192, more than one in most of the constituencies. Coming to the assured minimum facilities, every polling station would have toilet, drinking water, ramp, light, help desk, signage. सभी polling stations पे सुविधा होगी, और प्रयास ये है कि पहले आपको पूरी तरीके से वोटर लिस्ट में शामिल करें. शामिल करने के बाद आपकी जो वोटिंग एक्सपीरियंस है पोलिंग स्टेशन पे, उसको भी और सहज और सुगम बनाएं, और उसको ये भी माध्यम बनाएं कि
सोसाइटी में पीडब्ल्यूडीज, ट्रांसजेंडर, वुमेन, ओल्ड एज, सब किसी को सेंसिटिविटी स्पेसिफिकली एक through the medium of the voting it gets reflected, and entire we showcase and we put an example before the society that yes, at the polling station when we can do this respect and the separate treatment for them which is their due, why can't we do it elsewhere in the society? So this is our modest effort to bring this fact into the limelight. Coming to the elderly voters, as you know, in all these states also, they will have the facility to vote from their home. Form 12D 5 दिन के अंदर वो भर सकते हैं. Similarly, next, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग है स्लाइड जो आपको दिखाना था. बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां पर हम लोग अंदर जा रहे हैं ताकि हर वोटर के पास पहुंच सकें. अगर आप फर्स्ट स्लाइड देखेंगे, ये फर्स्ट टाइम पोलिंग स्टेशन है. 8 किलोमीटर इससे बचेगा चलना. जगदलपुर, बस्तर, छत्तीसगढ़, दिस इज दोज एरियाज. सिमिलरली इन राजस्थान, दिस इज ऑल्सो न्यू बूथ. तो एक स्पेशल कोशिश है कि जो लोग को कम से कम चलना पड़े. वैसे भी हमारा नियम है कि 2 किलोमीटर के अंदर में हम देंगे, बट जहाँ पॉसिबल नहीं था वहाँ भी हम भर रहे हैं. इसी प्रकार से जो हमारे मैंने आपको बताया था पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उनके लिए भी हम स्पेशल पोलिंग स्टेशंस बना रहे हैं. बफर जोन ऑफ फैन के अंदर में ये पोलिंग स्टेशन होगा जो कि मांडला एमपी में, जस्ट दी शोकेसिंग. और अगर आप नेक्स्ट वाला देखें, पिपरिया डिस्ट्रिक्ट नर्मदा एमपी, इसमें 165 किलोमीटर फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट. पीपल विल गो and this is the kind of rivers and all terrain they will cross. This is in Mizoram, 22 non-motorable polling stations. तो ये सिर्फ इसलिए आपको दिखा रहा है कि जो पोलिंग पर्सनल है वो कितनी मेहनत से, कितनी दूर में अपना ड्यूटी करने चाहते हैं. और 6 महीने की तैयारी सिर्फ इसीलिए है जिससे कि सबको सुविधाएं मिल जाएं. और इसीलिए I will like to appeal through you to all the voters of these 5 states कि अगर हमने इतनी मेहनत की है तो आप भी कम से कम वोट देने के लिए जरूर आए. Special request to youth, women and the people living in urban areas, those where we see a little apathy. Friends, आपको पहले भी ये बताया है हमने कि सी विजिल के माध्यम से कोई भी शिकायत कर सकता है किसी भी तरीके की इंड्यूसमेंट की, और जिसके पास हम 100 मिनट में पहुंचेंगे. और इसका प्रयोग में रिसेंटली हेल्ड इलेक्शंस में हमें काफ़ी शिकायतें मिली हैं और इंड्यूसमेंट रोकने में भी मदद मिली है. नो योर कैंडिडेट्स, ये हम हर स्टेट में दिखा चुके हैं कि किसी की भी अगर आपराधिक पृष्ठभूमि है तो उस आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कैंडिडेट को अपने बारे में 3 बार न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा, टीवी में देना पड़ेगा, और उसकी पॉलिटिकल पार्टी को भी आगे बढ़ के ये लिखना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसे कैंडिडेट को क्यों चुना. क्या उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो आपराधिक पृष्ठभूमि के कैंडिडेट चुने गए हैं उनके अतिरिक्त कोई और उपलब्ध नहीं था. वंस दे गिव दिस इंफॉर्मेशन, इट इज फॉर द वोटर टू डिसाइड on the basis of an informed choice as to what he wants to do. Another new initiative we have taken is on the integrated election expenditure monitoring. कुछ समय पहले, और इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हम सोचते हैं हमें मिलेंगे, और ये एक ट्रांसपेरेंसी और ईज ऑफ कंप्लायंस के लिए नया इनिशिएटिव है, जिसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको 31 अक्टूबर तक कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट देनी होती है कि उन्हें कहाँ से कितने पैसे मिले, और उसी के बेसिस पे उनको इनकम टैक्स की छूट मिलती है. तो पीछे देखने में आया था कि इसके बारे में कुछ सूचनाएं समय पर भी नहीं आती थी, और कुछ ऐसे केस भी थे जिसमें छूट नहीं वाजिब होने के बाद भी ले ली गई थी. तो इन सभी चीज़ों को भरने के लिए, कंप्लीट करने के लिए नाउ न्यू IT सिस्टम हैज बीन स्टार्टेड, and in which the contribution report which is due of every year by 31st October would have to be filled. Similarly, annual audit reports political parties को अब इसी IT tools में डिजिटल मोड में देनी पड़ेंगी, और एक और रिपोर्ट उन्हें देनी होती है पॉलिटिकल पार्टीज को आफ्टर एवरी इलेक्शन, जिसमें वो रिपोर्ट
30 दिन के अंदर देनी होती है जैसे ही चुनाव खत्म हो, और 75 डेज के अंदर में फाइनल रिपोर्ट, ताकि वो सिलेक्शन में कितना खर्चा पॉलिटिकल पार्टी ने किया। तो अब हमारे पास किस कैंडिडेट ने कितना खर्चा किया ये तो होगा, साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज ने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू ये भी होगा। दिस विल हेल्प इन ease for the political parties to fill up these details online, and would also help us in keeping it at one place and do whatever assessment and analytics is possible in addition to housekeeping. Similarly, जो inducement free elections का focus चुनाव आयोग और गंभीरता के साथ दे रहा है, उसके लिए भी एक इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम इस बार नया शुरू किया जा रहा है इन 5 असेंबली इलेक्शंस। व्हाट इज दिस? जितनी भी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, हम सबको कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग डायरेक्शंस देते हैं, जो मैं इसके तुरंत बाद आपको दिखाऊंगा बिफोर कमिंग टू द शेड्यूल, कि आप जो भी सीजर कर रहे हैं उसको करिए, डोंट वर्क इन साइलोज, वर्क इन ए कोऑर्डिनेटेड मैनर, बट इट डजंट गेट कोऑर्डिनेटेड ऑफन। So this system will give an access, will onboard all the central and state enforcement agencies during the election period, and they will have to report as soon as any action they take, and if they don't fill up, it will also tell us that for so long no action has been taken by a particular agency. This will also help us in compiling, do the trend analysis, do various kinds of things possible in that particular state. और आप सब अवगत हैं कि हर स्टेट के बहुत सारे स्टेट स्पेसिफिक इंड्यूसमेंट रिलेटेड इश्यूज हैं। अगर मिजोरम में इंटरनेशनल बॉर्डर है तो राजस्थान में भी वही इशू है, तो कहीं पर इंटर स्टेट ड्रग्स की प्रॉब्लम है, तो कहीं पर एक्सेस कैश और मनी पावर की प्रॉब्लम है। ऑल दैट विद the help of the respective enforcement agencies would get collated, and we hope would also get analyzed on a far more real-time basis, so that we can take corrective actions and we can nudge them or we can appreciate them. In this reference, we have got some check post established, which is in Mizoram, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Telangana, in all 940 check posts. These 940 check posts belong to different enforcement agencies, which is namely, by and large, police, state police, excise, commercial taxes, forest and transport. तो इन सब पांचों की जो पावर्स हैं वो अपने अपने एक्ट के अंदर में अलग अलग पावर्स हैं। Now what we have directed them to do a coordinated effort, pool their resources, establish synergies. पांचों एक साथ मिलके काम करें, और क्या काम करें? इन 940 प्लस चेक पोस्ट पर इंटरस्टेट बॉर्डर्स में they will keep a very strong watch, and we have almost told them to dry up inflow of cash, liquor and drugs. आपको जब पिछले कर्नाटका इलेक्शन हुआ तो वहाँ जाने के बाद जब हम रिव्यू करके आए तो जो 2018 का सीजर था वो एमसीसी अनाउंस होने तक उससे ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने कर दिया था। सो दिस इज a renewed focus, and all the checking of cargo movement through non-scheduled chartered flights. This we will issue the guidelines also in greater detail. ऐसी संभावना होती है कि जो पैसेंजर्स के अलावा कार्गो मूवमेंट्स है उसमें भी कुछ ना कुछ इन पोल बाउंड स्टेट्स में कोई मटेरियल इंड्यूसमेंट के थ्रू जा सकता है। कार्गो के पार्सल्स का रेलवे और पोस्टल डिपार्टमेंट के थ्रू भी चेकिंग शुरू हो। मनी पावर, all these agencies have been strictly asked to keep strict vigil and report in the system which we have stated just before this. Number of observers will be deputed, the general observers, police observers and the expenditure observers, and adequate CAPF. Similarly, the directions again at the polling stations, wherever necessary, we will keep the female staff to check impersonation. We will keep polling parties to move
only in the official vehicles, ताकि जैसे पिछले चुनाव में एक आध जगह एक प्राइवेट व्हीकल में बैठ गए थे, उस तरह की घटना ना हो। ये भी कहा गया है स्पेसिफिकली कि वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप्स को चुनाव से कम, ऐसा नहीं कि पहले दिन या दूसरे दिन में ही दें, एक आध हफ्ता पहले कम से कम जरूर बांट दें, so that people can know which booth, which place. Though we request them to check that much in advance on the voter helpline app. नया एक और change इस बार किया गया है because of the experience which we had in certain states. जो polling personnel हैं, उनको postal ballot मिलता था, और postal ballot मिलने के बाद वो उसको घर ले जा सकते थे और कभी भी by post भेज सकते थे till the date of counting. That's the standard practice for the postal ballot. It has been changed now. ये इसलिए कि बहुत सारे पोलिंग पर्सनल्स कुछ स्टेट में कंबाइन होके पोस्ट पोल अपनी कोई न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करते हैं, बिकॉज मार्जिन्स बहुत कम होते हैं, तो अगर 100, 200, 400 लोग भी मिल जाएं तो वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. So this could be a post poll opportunity for some to influence the voters or influence the results. Therefore, all of them now onwards in all the elections will vote only at the facilitation center when they come for train. This is before, so this will be physically collected, and the postal ballot facility is available in the same sense, but at the facilitation center. Next, now coming to friends, after mentioning that we are focusing far more on the inducement-free elections, because money power is one thing which we want to restrict. We now will come to the schedule which you are awaiting, state by state, and now to start with from the Mizoram, the date of poll will be 7th November, and date of counting would be 3rd, which is common of course for all the states, and elections in all these states would be completed by 5th of December. So date of poll is 7th November. Similarly, in case of Chhattisgarh, the elections would be in 2 phases. The date of poll would be 7th November and 17th November. The nominations after Mizoram for the first phase of the Chhattisgarh would happen on 20th, the 13th, and the last date would be 20th. Date of poll being 7th November, and for phase 2, 17th November. In Madhya Pradesh, this coincides with the second phase of Chhattisgarh, and date of poll would be 7th November. So, first Mizoram and the first phase of Chhattisgarh, then second phase of Chhattisgarh, and one phase in Madhya Pradesh. Thereafter, Rajasthan, where the date of poll will be 23rd November in one phase entirely in Rajasthan. The date of issue of Gazette notification would be 30th October, and date of counting for everyone being 3rd of December. Telangana would go last to the poll, and date of poll is 30th November, with the date of issue of Gazette notification being 3rd of November. And the entire election process would be complete by 5th of December. So this is what is the schedule. And again, I request all of you, through all of you, to all the voters to please come and exercise in the festival of democracy in a true sense. Thank you very much. Thank you for those detailed remarks, sir. Just hold on. Floor is open for questions. Don't stand up. Just keep sitting and just put up your hands and direct the mic to come to you. ये पांचों स्लाइड्स की डेट वैसे अभी आपको भेज दिया होगा. It's being tweeted to you. It's being tweeted, but हम दोबारा रिपीट कर दीजिए. Yeah. मिजोरम, visible to all. Next. Madhya Pradesh, date of poll 17th November. Rajasthan, 23rd November, and Telangana, 30th November.
We are doing counting on 3rd of December and finishing the entire election exercise on 5th of December 23. The floor is open for questions. Gentleman in the first row. Yeah. उनको mic दे दीजिए. We'll come to you next. गुड आफ्टरनून सर, मोहित दुबे हूँ सर, न्यूज़ नेशन चैनल से। सर मेरा सवाल ये है कि खासतौर पे अगर छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के परिप्रेक्ष्य में है, छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में आप मतदान करा रहे हैं, नक्सल प्रभावित इलाका है कई। सरकार का दावा है कि नक्सलिज्म तो हमने खत्म कर दिया, लेकिन इस बार भी आप 2 चरणों में मतदान करा रहे हैं। कितनी बड़ी चुनौती जो है नक्सल प्रभावित इलाकों में होगी आपको मतदान कराने के मद्देनजर, क्योंकि 7 राज्यों की सीमा छत्तीसगढ़ से जुड़ती है जैसा आपने कहा। इसके अलावा तेलंगाना के भीतर पिछले चुनाव में तमाम कैश और लिकर की बरामदगी हुई थी। इस बार कितनी चुनौती तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में आपको लेकर होने वाली है? Yeah, gentleman in the second row then. Yeah, mic is coming to you. Just wait. Yeah. सर मैं श्रीकांत भाटिया हूँ, संवाद सिंधी न्यूज़पेपर, हमारी नज़र न्यूज़ चैनल है। सर ये आचार संहिता के जो उल्लंघन होते हैं इलेक्शंस में, देखा गया है कि कोई एक्शन नहीं होता, सिर्फ आचार संहिता उल्लंघन के केस दर्ज हो जाते हैं। तो सर कोई आपके पास डेटा है कि लास्ट इलेक्शन में आचार संहिता उल्लंघन में क्या लीगल एक्शन लिया गया कैंडिडेट के खिलाफ? और पॉलिटिकल एक छोटा सवाल सर, आपने कहा कि जो कैंडिडेट पैसा खर्च करता है उसका रिकॉर्ड यहाँ रखा जाएगा, क्या वो रिकॉर्ड आम पब्लिक देख सकती है कि किस कैंडिडेट ने इलेक्शन में और किस पार्टी ने कितना पैसा खर्च किया? Yeah, gentleman in the second row there. In the middle of that row, please. मैं प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ से। सर मेरा सवाल ये है कि आपने आपराधिक छवि वालों का जो जिक्र किया है और उसको लेकर जो एक्शन की बात की है और जो प्रचार भी करना होगा मेरे को 3 बार बताना, लेकिन क्या ऐसे आपराधिक छवि वाले उनकी रोकथाम को लेकर इसके अलावा आपके पास क्या उपाय रहेगा, और अगर जानकारी नहीं मिलती तब एक्शन क्या होगा? The lady at the back over there. Yeah. Yeah, give it to the lady. Yeah. Amitu Jain from The Wire. मेरा सवाल इलेक्ट्रल रोल्स की प्योरिटी को लेके है। आपने बोला है कि जो BLO होगा वो जो डेटा है वो अपडेट करेगा। सवाल ये है कि BLO कितना कंप्यूटर savvy है ये डेटा अपलोड करने के लिए, और ये डेटा वो खुद अपलोड करता है या इज इट आउटसोर्स टू समबडी एल्स जो ये काम करेगा? और इफ इट इज आउटसोर्स देन व्हाट इज द प्रोसीजर दैट इज फॉलोड फॉर आउटसोर्सिंग this work to somebody who would be uploading this data? Thank you. Yes, we'll have another round. छत्तीसगढ़ में चुनाव के विषय में आपने प्रश्न पूछा। देखिए, हर नागरिक को, हर वोटर को हम रजिस्टर करें और हर वोटर के पास में हम बूथ लेके जाएं ताकि वो अपना वोट डाल सके और उसको सारी सूचना जो उसको इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए आवश्यक है वो उस तक पहुंचाएं। फेज 1, फेज 2 इन ऑल द इलेक्शंस दैट विल बी डन, और उसके लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। इसलिए हमें सबको अपील है कि वो सब वोट देने आए और जो जहाँ भी जितनी भी सुविधाएं और जितनी भी सुरक्षा देने का जरूरत है वो असेसमेंट करके उतनी वहां प्रोवाइड की जाएगी। कैश और फ्रीबीज, कैश, फ्रीबीज, ड्रग्स, लिकर, कंज्यूमेबल गुड्स, ये मेनेस है। हम लोग उसके प्रति पूरी तरीके से सजग हैं। जस्ट गिव यू ए स्मॉल फिगर, जो अभी पीछे 6 इलेक्शंस हुए उसमें अगर मैं आपको अलग से भी दिलवा दूंगा, लेकिन लगातार उनमें वृद्धि का जो प्रतिशत है, इन सम स्टेट्स इट इज अप टू 6000%,
but in overage it is, मैं बताता ही हूँ आपको exact. Karnataka was 83 crores in 2017. First I will speak the last election figure, then the recent. 83, which has increased to 384 crores. Tripura was 1.79 crores, increased to 45 crores. और Tripura में violence, you all remember zero, repoll zero, and this was the kind of improvement in the seizures. So what we are trying to do is to improve the overall environment of elections, be it violence, be it freebies, be it the ease of voting for the thing, be it the improvement in the human face of the entire electoral roll, transgenders, PBTGs. So it's an overall qualitative and quantitative change in the electoral roll, also in the way elections are held. Nagaland, 4 crore to 50 crore. We used to be concentrating more on the peaceful elections, which happened there. Simultaneously, this also happened. Meghalaya, 1.1 to 74 crores. All these figures we will get put on the social media also. Gujarat, 27 crores to 800 crores. We got huge drugs factory. Similarly, in UP elections, it was caught through the seas. HP, 9 crore to 57. Uttarakhand, 6 to 18. So, likewise, in all these states, and therefore, are very strict instructions to all the enforcement agencies, and we mean business. We have told them. It is not that हमने बोला और हम बोल के उनको वापस चले आए, नहीं. Railways, airports, private airfields, private unscheduled flights, drugs, borders, national and international, both. Storage of godown, in the godowns. All godowns have been identified by the enforcement agencies in each of these states where there could be a possibility of storage of any material of freebie. So, I think you will get to see the results and then decide for yourself, as I have explained about the 780 states. So, we are committed and also more responsibility on us to prove this in these 5 elections, because we want to go clean and far more into the 24 elections. आचार संहिता का इलेक्शन आपने उल्लंघन पूछा. आचार संहिता का उल्लंघन जैसे जैसे होता है उस पर हर एक पर कार्रवाई होती है. आप देखने से शायद रह गए होंगे, ये सब उपलब्ध हैं और उसमें लार्ज नंबर में हर स्टेट्स में हुई है. लोगों को जिन्होंने कहा है उनको वार्निंग्स दी गई हैं, केसेस हुए हैं और उन केसेस को हम जब भी वहाँ जाते हैं रिव्यू करते हैं. आपराधिक छवि के लोगों के बारे में जो प्रश्न पूछा गया, उनको वो एडवर्टाइजमेंट देना मस्ट है. That is what is the extent legal provisions as of now, regulatory framework, that उनके बारे में बताना वोटर्स को, ये हमारा कार्य है. जब एक बार वोटर को बताया तो उसको इन्फॉर्म चॉइस कि वो किसको वोट देंगे, ये उनका कार्य है. जो आपने इलेक्टरल रूल्स की प्योरिटी के बारे में पूछा और वर्क आउटसोर्स टू आउटसाइडर्स, there is no electoral roll related work which is ever outsourced to anybody. So let us clarify this all over again. किसी के पास में भी, it is again through you, the SSR work is starting in the entire country, except the officials or the government servants and the BLOs. Nobody is authorized to do any kind of survey or electoral related roles in the country. So much so, even the awareness works which the civil society does is not to involve in the profiling of the voter at all. So this is absolutely clear. और वोटर्स के घर में हाउस टू हाउस BLO जाएंगे. और जहाँ तक आपने इलेक्टरल रूल्स की और BLO की कॉम्पिटेंस की बात, तो देखिए, जब 18 साल में सबसे पहले वोटर बड़ा होता है तो मोर और लेस इंडिपेंडेंटली सरकारी तंत्र से सबसे पहले जो उसका एक कांटेक्ट होता है वो BLO से होता है, बिकॉज ही इज एंटाइटल्ड टू गेट ए वोट. सो आर 10 lakh plus BLOs, and we want to thank them here. They are
working very hard, going house to house, doing a survey. And house to house survey is available to them, and there is a application, IT based, which is available to them, and all of them, by and large, using that application. And also what they do, they are maintaining a BLO register. It is the purity of the electoral rolls in terms of all the parameters, like how much should be the 18 to 19 cohort, how much should be the 80 plus cohort, how much should be the women, how much they should compare to the population growth, how much transgender should be there, how much 80 plus there. If transgenders are available in, or PWDs are available in a particular state through Social Justice Department, we go and cross check कि उसके बराबर हमारे यहाँ आ गए कि नहीं आ गए. So electoral rolls purity is something which is our constitutional mandate, and we are very confident that we are doing it. Yeah, we take another round of questions. The gentleman at the last, followed by the lady over here in the middle. Yeah, the last row. Yeah, you would. The gentleman over there who's sitting behind you, right? Yeah, that one. सर मैं पीयूष पांडे हूँ, TV9 भारतवर्ष से। मेरा सवाल ये है कि फ्रीबीज को लेकर के आपने उसकी क्या परिभाषा रखी है, क्योंकि चुनाव के दौरान उसकी अलग परिभाषा है और चुनाव के बाद उसकी अलग परिभाषा है। Okay, the lady in the middle, please give her the mic. Someone just hand over the mic to her. Yeah, in the middle row. No. Yeah. Thank you, sir. Arunima from CNN News 18. Here, sir. If you could clarify for Chhattisgarh, since it's two-phase, the entire Naxal-affected area of Bastar goes to polls in first phase. If you could just clarify that. Yeah, the gentleman here in the middle The row. southern part goes to the poll in first phase. The part which is adjoining the Madhya Pradesh and to the northern side goes in the second phase. Yeah. मैं रवि त्रिपाठी हूँ जी न्यूज से। पोस्टल बैलेट को लेकर आपने इम्पोर्टेंट बात आज कही है। क्या इस बात की शिकायत कई पॉलिटिकल पार्टी ने की, और क्या इन चुनाव में इसको लेकर धांधली हो रही थी, इसका दुरुपयोग हो रहा था, इसकी वजह से ये बदलाव किया गया है पोस्टल बैलेट में, जो आपने कहा है अभी हाल में? The lady over there in the fourth row. Yeah. Question is related to Jammu and Kashmir Assembly elections. It's been a long time since we've been waiting for you to announce the polls. What is holding up the Election Commission in announcing these polls? And have you had any discussions with the government on scheduling of these polls? Can you just introduce yourself? I'm Bharti Jain from the Times of India. Thank you. Yeah, second row or left. Yeah, the last one. Yeah. सर मैं अरविंद हूँ दैनिक जागरण से। मेरा सवाल है फ्रीबीज से जुड़ा हुआ है कि जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टी में फ्रीबीज को लेकर प्रतिस्पर्धा बड़ी तेजी से बढ़ी है, इसको आयोग किस तरीके से देख रहा है और इस पर क्या कुछ अंकुश लगाने की जरूरत समझता है? Yeah, I think that's the last. That will be the last one. सर मैं अनिरुद्ध हूँ दैनिक भास्कर से। अभी 3 दिन पहले मध्य प्रदेश के एक लीडर ने कहा कि अगर अपनी अपोजिट पार्टी के बारे में कि अगर उस पार्टी को वहाँ से 0 वोट मिलेगा तो मैं उस बूथ के इंचार्ज को 51,000 रुपये दूंगा। तो क्या इस तरह की जो गतिविधि है उसको आप किस तरह से लेते हैं और इसका कैसे निवारण करेंगे? Thank you. 3 questions: postal ballot, J&K and freebies, and that's the last. Postal ballot का दुरुपयोग we will not say, but postal ballot, voters using postal ballots becoming a force and an interest group and deciding after the poll as to where to cast the vote was not perceived, was not the right practice. जब पोलिंग हो गई उसके बाद एक असेसमेंट करिए कि क्या मार्जिन्स हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं, और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अगर गवर्नमेंट सर्वेंट्स पोस्टल बैलेट वाले मिलके एक बार्गेन शुरू कर दें, सो उनके अपने कुछ भी इंटरेस्ट बहुत जगह में होते हैं, वो कर दें, तो दैट वाज नॉट जायज, एंड दे एवरीबडी मस्ट, यू हैव ए फैसिलिटी, यू मस्ट डू इट, सो दैट इज वन. J&K के इलेक्शन के बारे में
कमीशन के नज़र में सिक्योरिटी एंड अदर इलेक्शंस इन द स्टेट विच आर ऑल्सो साइमल्टेनियसली डू के साथ में देख के इसका निर्णय आपको सूचित करेंगे जैसे भी हम करेंगे। फ्रीबीज के बारे में जैसे आपने कहा कि किसी स्टेट में कोई अनाउंसमेंट, किसी स्टेट में कोई अनाउंसमेंट, पता नहीं क्यों 5 साल याद नहीं आती, लास्ट में ही महीने 15 दिन में सारे अनाउंसमेंट की याद आती है। बट एनीवे दैट इज विद इन द डोमेन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स। बट आपको जैसे अवगत होगा, कमीशन ने एक परफॉर्मा इशू किया था जिसमें ये बताने के लिए प्रस्ताव एक कंसल्टेशन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ की गई थी, एंड दैट परफॉर्मा इज इन पब्लिक डोमेन। इट इज अवेलेबल हियर ऑल्सो, इफ यू कैन सी, यू कैन रीड इट ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। ये क्या कहता है? ये परफॉर्मा बेसिकली ये कहता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को अपने मैनिफेस्टो में क्या करेंगे ये बताने का अधिकार है, लेकिन साथ ही साथ वोटर को ये जानने का अधिकार है कि ये कब करेंगे, कितना करेंगे और कैसे करेंगे। तो उसमें क्या कहा गया था? उसमें कहा गया था कि आप बता दीजिए कि डेट टू जीडीपी रेशियो क्या होगा, आप कितना डेट लेंगे, वो क्या रेशियो होगा, इंटरेस्ट पेमेंट टू टोटल रेवेन्यू रिसीट क्या होगा, आपको एफआरबीएम के टारगेट्स तोड़ेंगे नहीं, कितनी तोड़ेंगे, कोई योजना कम करके ये लागू करेंगे क्या, लोगों पर एक्स्ट्रा ऋण, एक्स्ट्रा टैक्स लगाएंगे क्या। सो everything comes in the public domain. That was the intention of that. And एक बहुत बड़ी इसमें वो है कि प्रेजेंट वर्सेस फ्यूचर जनरेशंस। आप प्रेजेंट में कितना करना चाहते हैं, और आर यू नॉट मॉर्गेजिंग द फ्यूचर जनरेशन। सो दिस इज अ बैलेंस व्हिच नीड्स टू कम, एंड पीपल, वोटर मस्ट नो कि वो फाइनेंशियल फंडामेंटल्स के बेसिस पे क्या पिक्चर निकल के आती है। एंड इन एनी केस, इन अनाउंसमेंट में तड़का ऑफ पॉपुलिज्म तो है ही है, एक बहुत बड़ा तड़का है पॉपुलिज्म का। तो जो जीत के आता है उसको वो चाहे तो निभाना उस पॉपुलिस्ट प्रॉमिस को, या रोकना, दोनों ही कठिन है। इसलिए पब्लिक हैज ए राइट टू नो कि फ्रीबीज कहाँ से पूरे होंगे, और वो डिस्क्लोजर्स पब्लिक को इन्फॉर्म चॉइस लेने के लिए होनी चाहिए। कमीशन हैज ऑलरेडी इशूड दिस सर्कुलर, दिस परफॉर्मा, हैड डन दी पॉलिटिकल पार्टी consultations, but as you are aware, this matter is sub judice, and Commission will act as soon as the clarity and the decision is available on this subject. Thank you very much. Thank you. Thanks to all of you. That brings us to the end of this press conference. Thank you for the comprehensive briefing, sir.